हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिपेयर करेंगे 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन। इसमें खराबी यह है, इसका डायोड खराब हो गया है, इसको चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसको बिना डायोड से डायरेक्ट सोल्डरिंग आयरन को कनेक्ट करके डायरेक्ट 220 AC वोल्ट देंगे तो ये देखिए हमें एक डायोड की जरूरत होगा। इस डायोड का नंबर मैं ऊपर में लिख देता हूँ। इस डायोड को सोल्डरिंग आयरन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें डायोड भी फिट कर लिए हैं। अब इसको ट्राई करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं।